total revenue upfront. So if I'm paying $1,200 to get a warranty for 12 months, in financial world, I would post the offsetting entry for customer invoice to deferred revenue. And from deferred revenue, every month I would recognize $100 to revenue. So the debit deferred revenue, credit revenue posting, which is done monthly, is my revenue recognition. Revenue recognition is in three different types. There are three different types of revenue recognition. A, you recognize the total revenue upon the delivery of the product. A good example of that is you sell a product to the customer. So today I sell a product to the customer. Actually, just a little break. आप जब इधर आए थे मैंने आपका इंटरव्यू लिया क्या? मुझे याद भी नहीं है. मुझे याद भी नहीं है. मैं एक ही लिया था क्या? कोई और भी लिया था? Yeah, yeah. नहीं वो मुझे याद भी नहीं है. कल मेरा डेलॉट लैपटॉप ओपन किया था, उसमें मीटिंग रिक्वेस्ट दिखाई थी. एक किसका इंटरव्यू है बोल के रेज्यूमे खोला तो आपका था. मुझे याद भी नहीं है कि मैंने आपका इंटरव्यू लिया. एनीवेज, so going back, I'm saying that because all this time I didn't know that you were a financial candidate. Now I'll be hard on you knowing that your background is from finance. मैं मेरी तरह आप भी कोई इंजीनियर कोई बीटेक वाले समझ रहा था आज अब तक, इसीलिए आप जो भी बोल रहे थे मैं बस सुन रहा था. आप फाइनेंस बैकग्राउंड है, आज से मैं आपको वो लीनियंस नहीं दूंगा. मुझे आप फाइनेंशियल एंट्रीज सच में बताइए. मैं नहीं जानता आप ओवर टाइम करके फाइनेंस के किताब फिर से पढ़ेंगे, पर मैं आपको वो लीनियंस कल रात से नहीं देने वाला हूँ. कल रात ही देखा था मैंने आपका रेज्यूमे. ओके, एनीवे, सो माय फाइनेंशियल पोस्टिंग. It's your bad luck that I opened the light laptop and I got to see your resume again. But I'm really serious. I'm not going to give you any leniency. So anyways, let's get back to our interview. So my financial posting for okay, now I'll take your interview. Which positions? Okay. So what is my financial what is my financial interest for delivery document? What is the process of SD? Tell me the process of SD. SD process flow. पहले बिलिंग करेंगे क्या? आप कौन से प्लैनेट से आए हैं? कस्टमर को कुछ बेचते नहीं, पर पहले बिल लगाते हो. आप जब शॉप में जाएंगे पहले वो आपका पैसा लेगा और बाद में आपको वो खरीदने के लिए बोलेगा. ओके सर, अब तो सीरियसली बोल रहा हूँ. आई ऑलरेडी टोल्ड ऑल दिस टू यू इन द पास्ट, पर आपने कभी काम नहीं किया तो इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ. पर अगले बार तो मैं फिर से नहीं बोलने वाला. सो डू रिमेंबर, फर्स्ट यू स्टार्ट विद अ कॉन्ट्रैक्ट. You give a contract to the customer. You set up a contract saying that this is what we are going to do for the next X years. With regards to a contract is an optional step. You can set up a contract or you can just do orders, one order at a time. So with respect to a sales contract, create a sales order. Now a sales order is a must. When you create a sales order, you are telling that I will be delivering this to the customer. So with respect to a sales order,
first you do the PGI, post goods issue. So you are crediting something from your inventory. Goods issue is nothing but I'm selling something to you. So I take my finished product and I send it to you. I do the shipment. So actually, before the PGI, I do the delivery, and with respect to the delivery, I do the post goods issue. Delivery document is nothing but I inform the carrier that this is ready to be picked up. So the carrier comes to my warehouse, he picks up the box, and he is in process of sending that to you. With respect to the delivery, I create my goods issue. Goods issue is nothing but now the carrier has actually took away the box from my warehouse. So I'm not the owner of that product anymore. So think you ordered a cell phone with me, and I don't have the cell phone yet. So what is my accounting entry here for the PGI? What is debit? What is credit? So cost of goods sold debit and credit is my inventory. So now with respect to this, I create my billing document. Now what is the debit and credit? So now think about this as revenue recognized. Think of this as I'm not selling you any product. Okay, let me put it down. So this is revenue. So this is first type of revenue recognition where I post everything to the revenue uh, at the time of billing. So this is instant revenue recognition. Now in other scenario, we have 41. I have a contract. I do my delivery and think I am not going to recognize everything at the same time. I'm going to recognize. So I post everything into deferred revenue, which is a deferred revenue कौन सी अकाउंट होती है? Yep. No. पहले उधर से स्टार्ट करेंगे. How many types of accounts are there? Think of Dolby. एक हिंट देता हूँ आपको. Every account number, the first digit of the account number at Dolby represents one account category. So can you think of any account which starts with a one at Dolby? Okay. What do you call those accounts? But assets mean, for example, 100,000 to 1413999 are my liquid assets. And 14000 say 14999 are my fixed assets. So liquid assets, India ka term hai either current assets. Okay, so the 1 series is my asset account. 2 series, what is my 2 series account? Can you think of a 2 series account? No. Receivable कौन सी account होती है? Okay, let's start from there. हाँ, वो asset है, right? I need to get $100 from you, so that is my asset. So it is in my 1 series account. 2 series is my out of it. I have to pay you $100. So I owe you $100. What kind of account is that? Yes. So 2 series is my liability. 3. Can you think of any 3 series account? Hmm? Expenses or revenue क्या सर? दो different categories है. नहीं. 3 series. Okay, 4 series is my revenue. 5 series is my COGS. 6 series is my
expenses. 7 series is my other P&L. Okay, 3 series is my other assets. For example, FX gain or loss. नहीं, FX gain or loss नहीं, CTA, cumulative translation adjustment. Liability में vendor recon account. नहीं, sorry, 3 series is my equity account. Vendor recon account, other liability accounts, GRIR account. So equity में मेरा CTA, मेरा partnership distribution, मेरा controlling interest. Revenue is my revenue. So products revenue, services revenue, licensing revenue, COGS is COGS, expense, any expense account, and other P&L is my CTA expense account. CTA नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, FX gain or loss account. So going back here, my deferred revenue is a liability account. So every month I post my Rev Rec document, which is debit, deferred revenue, and credit revenue. Okay, so this is called time-based revenue recognition. Okay, now I'll tell a specific example in Dolby to explain the third part. So this is instant, which is nothing but upon billing. The other one is time-based, where you recognize the revenue over the period of time. The third and final one is milestone-based. So think of it as in Dolby, there is a product called as CP850 SB, which is Atmos bundle. So this is a bundle product. Do you know what a bundle product is? Yeah, that is correct. That is exactly correct. So okay. So VA01 OR is my regular order, 101010. Just to show you, in Dolby there are 3 different divisions: products, services, and licensing. These are the 3 main Dolby revenue categories. In SD, products is division 10, services is division 20, licensing is division 30. This products and licensing and services is only done in US or Netherlands. For licensing, Netherlands, US is 1002 sales org, Netherlands is 2000 sales org. For services and products, US is 1000 sales org and Netherlands is 2000 sales org. This is Dolby sales matrix. Any sales order from Dolby will only have these 3 characteristics. So what this means is, in US, I have a different sales org for licensing and different sales org for products. But in Netherlands, I only have one sales org for both products and licensing. That is a must to remember. Okay, so now, because I am trying to create a product, I created it in 101010.
So I'm trying to create a sales order to a customer for CP850 SB, order quantity 1. So as I said, this is a bundle. So as I hit enter, the bundle will come up with sales bomb. And do you know what this screen is? This is the characteristic screen where I say this is the MTO make to order screen. In make to order, this screen comes up. When I talk about make to order scenario, I'll let you know about the screen. But this is characteristic assignment screen. I'll tell you what that is. You will understand more about this when we talk about MTO. Anyways, now as you see, I entered SB. Now it's split into two things. The CP850, which is a product, SX CP850, which is a service. इसका मतलब क्या है? मैं कस्टमर को एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ एटमॉस बोल के, पर ये इतना बड़ा सा प्रोडक्ट है, जो भी खरीदेगा मैं उसका थिएटर में जाके मैं खुद ही इंस्टॉल करूंगा. तो इंस्टॉलेशन के लिए मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, तो सर्विस के लिए एक लाइन आइटम है, प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट सेल के लिए एक लाइन आइटम है. क्यों इसीलिए बोल रहा हूँ? अभी प्रोडक्ट जब बेच दिया मैंने, इसका पीजीआई गया, प्रोडक्ट का रेवेन्यू उसी समय में रिकॉग्नाइज करूंगा. Okay, so as soon as I do the PGI for CP850, you will see the revenue of 25,000. But this $18,000 revenue, I will only recognize when I perform the service. मतलब मैं आपको आज वो सेलफोन बेच सकता हूँ, पर आपने क्या किया? सेलफोन के अलावा मैं आपके घर आके वो सेलफोन सेटअप करने के लिए आपने मुझसे ऑर्डर लिया. मैं बोला कि अरे भाई सेलफोन के लिए 500 पे करो मुझे, और घर आके सेलफोन सब कुछ सेटअप करने के लिए आपका iTunes अकाउंट सेटअप करता हूँ, आपका आप इंस्टॉल करके देता हूँ, आपका गाना उसमें डाल के देता हूँ. वो सब करने के लिए $100 दो मुझे. पर क्या मैं खुद ही सेलफोन लेकर आपके घर नहीं आऊंगा? सेलफोन आज फेडेक्स से आपको भेज दिया मैंने, पर मैं इतना बिजी हूँ, मैं 2 हफ्ते तक मैं आपका घर नहीं आ सकूंगा. तो 2 हफ्ते के बाद मैं जब आपके घर आके आपका ये सेटअप करता हूँ, at that time only I can recognize the 18,000 revenue. So that is called milestone based revenue. मतलब वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ ना कुछ माइलस्टोन होना चाहिए. It's not a correct example, but a good example is, think about you're constructing your house. From a vendor side, okay, not from a vendor side, let's not confuse things. समझो कि आप मेरा घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मैं आपको क्या बोलता हूँ? हर महीना फर्स्ट को आपको मैं $1,000 पे नहीं करूंगा. मैं आपको क्या बोलता हूँ? जब आप फाउंडेशन लगाएंगे, कंप्लीट करेंगे, तब 1,000 पे करता हूँ. जब वॉल्स डालेंगे तब 1,000 करता हूँ. जब सीलिंग डालेंगे तब और 1,000 पे करता हूँ. मेरा कहने का ये मतलब, it's based on activity. Now, if you take 2 months to create the foundation, or if you take 2 days to create the foundation, that's up to you. But I need a specific event to occur for me to pay that. So those are milestones. In this scenario, the milestone is I'm coming to your home and I am installing I'm servicing the product. I'm installing the product.
So that is my service-based revenue or milestone-based revenue. So now let's go to SAP, because this all you know. Now, how do I determine? Okay, you tell me, how do I determine where does the accounting go? How do I put in the system? सिस्टम को कैसे पता ये 25,000 कहाँ जाना है, ये 18,000 कहाँ जाना है, मैं किस ऑब्जेक्ट के साथ एक कॉन्फ़िगरेशन डालता हूँ मटेरियल में. ओके, मटेरियल में CP 850 में मैंने इसका प्राइस 25,000 बोल के डाला था, पर वो 25,000 कौन से अकाउंट में जाना है वो कैसे पता मुझे? That is your SDFI integration VKOA table. So in VKOA, you determine your GL account based on all these condition records. So, for example, let's see what's going on here. So if I go to environment analysis, account determination. Now, okay, पहला condition types. Okay, let me show this here. Now, if you look at any of the VQA configuration, right, depending on these are your keys, VQA5, CAUS, sales or account key, order reason, you have two GL accounts. You have a GL account and you have the provisional account. So you have the GL account, you have the provision account. The provision account is your deferred revenue account where it would post at the time of billing. Your GL account is the account where it would post at the time of recognition. Now I told you time-based, milestone-based, and instant, right? Instant revenue तो कुछ नहीं है. I just put in this account. When it posts, it will directly post to this account. If I have here, it will post to here, and upon recognition, it will post to here. And all this is, there are four main things by which you control generally your accounting policy. One is your item category. Item category tells you which type of account, which type of revenue recognition is being used. The other one is customer account assignment group. The other one is material account assignment group. The final one is order reason. उसके बाद जो भी है catch all general.
903, 904, 905. Basically, SAP gives you 1, 2, 3, 4, 5. On top, whatever combination you want to use, you will put those in, and you in other part of configuration, you tell the system what is the priority level, which table comes first. So it's not actually 1, 2, 3, 4, 5. It will be, I think it is 905, 904, 903, and then 1, 2, 3, and then 5, and then 4. So that's also in configuration. Okay, so so that's it. So these are the general things by which you determine your customer account assignment group. Let's talk about it. Why do you need some characteristic from customer to determine your GL account? आप बोल सकते हैं क्या? I'm telling you, SAP gives the functionality. Customer account group, assignment group is nothing but a field on the customer master. So I'm just telling you, from SAP allows you to SAP allows you to determine a GL account based on some field on the customer master. Can you give me a scenario why I would need GL account to be determined based on a customer master field? That can also be, but जनरली वी डोंट पोस्ट. जनरली कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं बोलती है कि मेरा एपैक रेवेन्यू इस जीएल अकाउंट में पोस्ट करे. मेरा वो भी कर सकते हैं, पर वो भी कर सकते हैं, वो भी वैलिड एग्जांपल है, पर उतना सारे कस्टमर्स नहीं होंगे जो बोलेंगे कि मैं जियो का रिपोर्टिंग जीएल अकाउंट से करूंगा. मैं जियो का रिपोर्टिंग जनरली डायरेक्टली सेल्स ऑर्डर में कस्टमर होता है, कस्टमर के ऊपर उसका जियो होती है, तो पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी अवेलेबल है. उसके ऊपर मुझे एक और नया जीएल अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है. मतलब जनरली आप कोई इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे और बोलेंगे कि आपका क्लाइंट बोलेगा कि मुझे जियोग्राफिकली रेवेन्यू पता करनी है. एसएपी में सोल्यूशन क्या है? अगर आप बोलेंगे कि आपके 10 कंट्रीज के लिए 10 जीएल अकाउंट्स क्रिएट करो, तो आपका चार्ट ऑफ अकाउंट मैनेजेबल नहीं होगा. आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अभी 100,000 जीएल अकाउंट्स होंगे. किसी को कुछ भी याद नहीं रहेगा. रिकंसिलिएशन के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होगी. तो इसीलिए जितना कम हो सके उतना कम जीएल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं इसके ऊपर. तो इसीलिए मैं उसको वो सोल्यूशन दूंगा कि हाँ, तेरा रेवेन्यू एक ही जीएल अकाउंट में डालो, पर बीआईआर में एक रिपोर्ट क्रिएट करो कि अभी जीएल अकाउंट के ऊपर तो सेल्स ऑर्डर नंबर है, सेल्स ऑर्डर नंबर के ऊपर तो कस्टमर है, कस्टमर के ऊपर तो उसका कंट्री है. तो इन सबको ज्वाइन करके एक बीआई रिपोर्ट क्रिएट करो बोलता हूँ. बट वट एवर यू सेड इज पॉसिबल. जनरली ये कस्टमर अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप में किसके लिए यूज करूंगा? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई एम सेलिंग एट ए एक्स प्राइस टू डीलर्स, आई एम सेलिंग एट ए वाई प्राइस टू इंडिविजुअल कस्टमर्स. ऐसे ही होती है ना. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बड़ा सा शॉप में जाएंगे, अगर आप 1000 पीसेस ऑर्डर करते हैं, आपको एक दाम मिलेगी. अगर आप एक पीस ऑर्डर करते हैं, आपको एक दाम मिलेगी. और इंटर कंपनी कस्टमर्स भी होते हैं. अगर मैं मेरा इंटर कंपनी को बेच रहा हूँ, तो कुछ मार्जिन नहीं लेके डायरेक्ट प्राइस पे बेच देता हूँ. तो उन सब के वजह से
में मुझे कस्टमर अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप चाहिए generally. So if it's a dealership I'm selling it to, I'll post to one GL account. If it's a single customer, I'll post to another GL account. Okay. Same thing with material account assignment group. If it's for example, Atmos related product, I want the revenue to go to one GL account. For example, इसका example सोचिए कि आप एप्पल में काम करते हैं. एप्पल बोल सकती है कि मेरा आईपैड रेवेन्यू जो भी है एक जीएल अकाउंट के ऊपर जाना चाहिए. इसका मतलब आईपैड 2 वही जीएल अकाउंट पे जाना चाहिए, आईपैड 3 वही जीएल अकाउंट पे जाना चाहिए, आईपैड एयर वही जीएल अकाउंट पे जाना चाहिए, आईपैड मिनी वही जीएल अकाउंट के ऊपर जाना चाहिए, और आईपैड मिनी का चार्जर अगर किसी ने खरीदा वो भी वही जीएल अकाउंट पे जाना चाहिए. सिमिलरली आईपैड आईफोन्स, सिमिलरली मैक. मतलब वो एक ही मटेरियल नहीं, वो पूरा मटेरियल फैमिली एक ही जीएल अकाउंट पे जाना चाहिए. तो मटेरियल अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप. ऑर्डर रीजन तो सिंपल, अगर मैं फ्री में आपको भेज रहा हूँ तो आप जनरली पैसे देकर ही मुझसे खरीदते हैं, पर आप इस दिन आके पूछे कि अरे ये चैरिटी के लिए है, तू भी फ्री में दे दे मुझे, तो मैं फ्री में भेजता हूँ. तो आप प्रोडक्ट सेम है, कस्टमर सेम है, पर ऑर्डर रीजन के हिसाब से मैं दूसरे जीएल अकाउंट पे डालना चाहता हूँ. So these are all the reasons why I have different account assignment integration. Now on top, we talked about item category. So now okay. Now this is account assignment item category. Now if you look at any item category, this has your billing relevance, saying what kind of billing do you want to do. What kind of billing का मतलब क्या होती है? Is it delivery related billing? Is it intercompany billing? Or is it order related billing? उसका फर्क क्या है? For example, if you go to VF04, you can see all the check boxes. Is the billing going to be created for order related, delivery related, rebate related, intercompany? इन सब का मीनिंग क्या होती है? Delivery related is when I'm selling you a product. In that case, billing will only happen with respect to a delivery document. Order related billing is where I don't have a delivery, where I have services, or where I have licensing. In licensing model, I am not selling anything to you. I will not have a delivery doc there. There my doctor is simply sales order and billing doc. So that is determined by the item category. And similarly, my revenue recognition. So these are the different revenue recognitions. Blank is standard revenue recognition, A is time-based revenue recognition, and B is service-based. So on the item category of the material, you are saying which type of revenue recognition should be used by the system. So now when you combine all this on your material pricing procedure, so if you go into your material and if you look at your conditions, it has these conditions. ZCOM has the value and it need to post the ZCOM. So based on the ZCOM condition type, it posted the values to, it determined the GL accounts as these. How did it determine?
So first it looked at, I'm sorry, Z कम बोला था, पर actually TR00 है. But anyways, if you look at TR00, first it looked into this first table 905 which we talked about earlier. 905 में इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से उसको कुछ जीएल अकाउंट नहीं मिली क्योंकि अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप ब्लैंक थी. फिर दूसरी टेबल में देखी, फिर तीसरी टेबल में देखी, फिर चौथी टेबल में देखी, इधर कहीं भी जीएल अकाउंट नहीं मिला. तो फाइनली अकाउंट की टेबल में देखी जहाँ उसको जीएल अकाउंट मिला, तो उसके हिसाब से वो जीएल अकाउंट बना दी. ओके, सो नाउ फॉर दिस सर्विस मटेरियल देखना भूल गए थे. तो अगर सर्विस मटेरियल में देखेंगे तो जीएल अकाउंट डिफरेंट है, इधर 45 है, इधर 46 है. तो इसके हिसाब से मैं क्या बोल रहा हूँ, now if you remember, this is my Atmos bundle, right, which has CP850 material which is my Atmos, and it has SX CP850 which is my service. So here my item category is billing based, my item category is, first my item category is billing relevant. So I'll bill the customer upon the delivery document, and I recognize the revenue as blank, as in whenever I sell this to a customer, I'll directly post it to the revenue account. And I have different revenue accounts for services and products. Products revenue account is 45, service revenue account is 46, as you saw. So now the process flow is, CP850 के लिए मैं डिलीवरी डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, डिलीवरी के हिसाब से बिलिंग क्रिएट करता हूँ. बिलिंग मेरा क्या होगा, डेबिट कस्टमर एंड क्रेडिट डायरेक्टली 450000 जीएल अकाउंट for whatever was our 25,000. Now for CP, this is for line item 1. Now for the service item, there is no delivery document. It is order related billing. So you bill the customer. When you bill the customer, your entry is debit customer and credit deferred revenue. This is milestone based because I need to come into your home and I need to perform the service. And upon performing the service, my revenue recognition will post to debit 22,000 and credit 46,000. So this is my whole revenue recognition concept. I have my item categories which control what kind of billing document it is and what kind of revenue recognition will happen. I have my I have my GL accounts. Based on my VKVA config, I have my GL accounts snagged and my documents are posted. That's it. That's the whole concept of it. But of course, on top of this, there are so many other things which we will discuss when we go into detail of each. मतलब क्या बोल रहा हूँ? I said upon performing service, you recognize this revenue. But how does system know when you perform the service? That is when you enter acceptance date of the material. So upon performing the service, you create a service order. So service create करने के लिए क्या होगा? ये जब create करेंगे, अंदर इसके थ्रू एक सर्विस ऑर्डर क्रिएट होगा. आप सर्विस ऑर्डर को लेके हम यूजर को मैन्युअली क्रिएट करने के लिए बोलते हैं, तो वो कुछ भी यूज नहीं है ना. तो सेल्स ऑर्डर के थ्रू सर्विस ऑर्डर क्रिएट करते हैं, और जब भी इंजीनियर जाके सर्विस परफॉर्म करेगा, वो सर्विस ऑर्डर को टेक्निकली कंप्लीट टी को करेगा,
और टेको करने के दिन मैं आके इधर एक्सेप्टेंस डेट पॉपुलेट करता हूँ। जब भी एक्सेप्टेंस डेट पॉपुलेट होती है मैं उसको रिकॉग्नाइज करता हूँ। तो मैं वो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जब एक्सेप्टेंस डेट करता हूँ तभी रिकॉग्नाइज करने के लिए मैं स्टैंडर्ड VF44 नहीं, मैं VSMSP बोल के सर्विस माइलस्टोन सेट प्रोग्राम यूज करता हूँ। तो ये सब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है। चलिए सर, ये है रेवेन्यू रिकॉग्निशन बेसिकली। Okay, what I want you to do for tomorrow, forget about the service part, but just in ECD 130 किसी के हेल्प मत लो। किसी के हेल्प के अलावा आप मुझे CP 850 SB का डिलीवरी और बिलिंग करके दो। Yeah, that's it. Just create a sales order for CP 850 SB material, create a delivery document, create a PGI, create a billing doc. ओके सर, चलिए मैं नज़ीर से 1-2 मिनट बात करता हूँ, कल बात करेंगे हम। आप बोले कल कि आपको रेवेन्यू रिकग्निशन में आना है, तो इसीलिए ये सब बता रहा हूँ।